हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, अब तक हमने ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं। अब हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलो, लेट्स सी what is there in this concept and how do we analyze which is an active voice and which is a passive voice. Okay, so hello kids, all transitive verbs have two voice. Okay, active and passive. तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स किए हुए हैं पहले भी। तो अब देखोगे ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, याद है ना आपको? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंपेयर देम. ऑलराइट. Priya reads a book. A book is read by Priya. Okay. In the first sentence, the subject Priya reads a book. It means Priya is the active doer of the action. Okay. Therefore, the verb reads is said to be in the active voice. Okay. Now, in the second sentence, the subject book is the receiver of the action. So, it performs no action. Therefore, the verb is read is in the passive voice. तो अगर आप देखोगे पहले सेंटेंस में हम सीधा बता रहे कि प्रिया रीड्स अ बुक, तो जो सब्जेक्ट है वो बुक पढ़ रही है. ओके, इसके लिए हम उसको बोलेंगे वो एक्टिव वॉइस है. अब अ बुक इज रेड बाय प्रिया, तो यहाँ पे हम जब सब्जेक्ट बना रहे हैं बुक को, ओके, तो हम इसको बनाएंगे बिकॉज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ओके, इट परफॉर्म्स नो एक्शन. ओके, इट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन रिसीव कर रहा है. ओके, तो उसके लिए वो हो जाता है इन द पैसिव वॉइस. क्लियर? ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट, ओके, जो सब्जेक्ट है विच इज़ द बुक, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. दैट इज वाई इट बिकम्स इन द पैसिव वॉइस. ऑलराइट. सो एक्टिव वॉइस, अभी हम डेफिनेशन देखते हैं एक्टिव वॉइस का. व्हेन द सब्जेक्ट इज द एक्टिव परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, the verb is said to be in the active voice. Like Ram eats a mango. Passive voice कब होता है? When the subject is not the doer but the receiver of the action. Okay, the verb is said to be in the passive voice. Okay, a mango is eaten by Ram. Clear? चलो, अब स्मार्ट बनते हैं by doing the exercise. Okay, that will help you understand the concept also in a better manner. Underline the verbs in these sentences and write A for active and P for passive voice. Okay. Dogs generally bark at the strangers. Okay. So, यहाँ पे generally barks. Okay. So, barks is what? Active. So, this is an active sentence. Okay. It's in the active voice. Barks. Okay. The deer was killed by a hunter. तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज किल्ड बाय द हंटर. ओके, तो किल्ड जो है वो वर्ब है. ओके, बट ये आएगा हमारा इन द पैसिव वॉइस. ओके, अगर हम बोलते हैं अ हंटर किल्स द डियर, अ हंटर किल्ड द डियर. ओके, अगर हम वैसे बोलते हैं तो हमें पता है कि हंटर इज द सब्जेक्ट, ही हैज़ परफॉर्म द एक्शन ऑफ किलिंग द डियर. Okay, but यहाँ पे the subject जो है it has received the action. Okay, the deer was killed by a hunter. Clear? So this becomes in the passive voice. All right. So अभी जल्दी जल्दी बाकी sentences अपने आप solve करने. चलो, अब देखते हैं what is the different ways that we can write the sentences. Okay, active voice में. Okay, study the following changes carefully. Okay, in active voice and in passive voice. First one, parents love children. ये active voice में है. अब इसको passive voice में बोलेंगे हम लोग, children are loved by parents. Okay, Rupa wrote a letter. A letter was written by Rupa. The hunter killed a bird. A bird was killed by the hunter. Clear? Okay, easy. So, in the above sentences, we observe that when we change a verb from active voice to passive voice, the object becomes the subject. Okay, and subject becomes the object of the passive voice. In passive voice, we use by before the new object. तो जब हम verb को change करते हैं from active to passive, तो वो change हो जाता है
तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ओके वो बन जाता है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ओके. और यहाँ पे हम यूज करते हैं बाय वर्ड ओके बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट. द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब ओके इज ओके बी, is, am, are, was, were, etc. plus past participle in the third form okay of the verb as love, are loved. Wrote becomes was written. So फिर उसके बाद an intransitive verb okay, a verb without object cannot be changed into the passive voice because it has no object. सो रिमेंबर दिस रूल कि ये जो आप चेंज कर रहे हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में है वो तभी ही मुमकिन है जब यहाँ पे आपके पास होगा एक ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी, let's practice this by doing the exercise. Change the following sentences from active voice to passive voice. अब हम ये change करेंगे. Alright, the police arrested the thief. The thief was arrested by the police. Alright, Ram eats an apple. The apple was eaten by Ram. Clear? ओके अब जल्दी बाकी सेंटेंसेस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना अपने आप. ओके, बट डू नॉट फॉरगेट टू रेफर टू द रूल एंड रिमेंबर देम so that it helps you in answering the exercises and using it in your day-to-day vocabulary also. All right, children? So get going.